Now we will start the class, Study हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. गॉट इट. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. एंड लेटर ऑन भी डिस्कस दैट की मेंडलीव की जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल में उसमें हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर, उसका भी हमने डिस्कशन किया था. एंड उसमें हमने बेसिकली जो मेन था कि देयर वाज 9 ग्रुप. हाउ इट वाज 9 ग्रुप. अब ग्रुप 1 से अगर चलते हो तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. लेटर ऑन ग्रुप 8 इज देयर एंड वन मोर ग्रुप इज दैट इज द जीरो ग्रुप. जीरो ग्रुप को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे 9 ग्रुप्स हो जाएंगे. तो 9 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स. उसके पहले हमने बात किया था डॉबलिनर ट्रायड. ट्रायड में हमने देखा था कि a set of three elements having similar properties in which mass of the middle element is arithmetic mean of the first and third. So that was also after the triad हमने next पढ़ा था that was न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जहां पे हमने देखा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि be arrange the elements in increasing order of atomic weight. Got it? Then every eighth element shows similar property with the first element. But उसकी भी limitation थी because that was not applicable after calcium. And that was only applicable up to calcium and lighter elements. Heavier element does not follow. So Newland law of octave was also got failed. Later on Mendeleev ने बहुत ही अच्छा एफर्ट पुट किया and he did lots of research. एलिमेंट्स का उन्होंने रिएक्शंस कराए, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाए, हाइड्रोजन गैस के साथ उन्होंने हाइड्राइड बनाया. Then after he discussed the properties of different element. And after the many research he got an conclusion that कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में रख देते हैं तो दे आर गोइंग टू शो द प्रॉपर्टीज. वहां पे एक रेगुलर रिपीटिशन आता था. रिपीटिशन वाज अब after a certain regular interval. That interval was 2 8 18 like that. तो उसमें what is the group. So when we talk about the group runs top to bottom. Top to bottom. Correct. Whereas periods run from left to right. Periods हमारे left to right चलते हैं. नेक्स्ट हमने बोला था कि वहां पे इंक्लूडिंग अगर हम नोबल गैसेस को कंसीडर कर लेते हैं देन वी आर हैविंग 9 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स. 9 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स. Now we have to discuss what are the drawbacks and what are the achievements. क्या थे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट से बात करेंगे. तो फर्स्ट जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा Mendeleev did the correction of atomic masses of few element. Got it? तो कौन से एलिमेंट थे उन्होंने क्या करेक्शन किया था. तो आई विल टेक द वन ऑफ द एग्जांपल दैट इज योर बेरिलियम. व्हेन वी टॉक अबाउट द बेरिलियम तो बेरिलियम का अगर आप देखो तो बेरिलियम्स एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एट द टाइम ऑफ बिफोर द मेंडलीव की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक मास था 13.5. दैट वाज 13.5. करेक्ट. एंड व्हाई द 13.5. क्योंकि बिफोर द मेंडलीव इट ऐसा एज्यूम किया जाता था कि बैलेंसी ऑफ beryllium was supposed to be 3 and its equivalent. इसका जो equivalent weight था, equivalent weight की अगर हम बात करेंगे तो that equivalent weight of beryllium was supposed to be 4.5. Equivalent weight तो experimental data, we cannot deny it. Got it?
And what is the actually equivalent weight? And once you are not familiar with this, so I will simply say that equivalent weight का एक common सा formula होता है mass per unit valency. Got it? Equivalent weight को आप simply आप ऐसे लिख सकते हो equivalent weight is going to be ratio of atomic mass divided by valency. So before the Mendeleev, all the scientists assumed to be that valency of beryllium was going to be 4.5 and the valency is going to be 3 and equivalent weight is going to 4.5. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो. What is just use this formula. अगर हम इक्विवेलेंट वेट को 4.5 ले लेते हैं और इसकी वैलेंसी को हम क्या मान लेते हैं बेटा 3, देन व्हाट विल हैपन. अगर हम इसको यूज करें इस फार्मूले के हिसाब से तो योर आंसर विल बी सेम 4.5 multiply by 3, it is going to be 13.5 and the atomic mass unit is the U. now अगर इसका एटॉमिक मास अगर 13.5 आ जाता है तो इसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा. गॉट इट. हाउ द पोजीशन इज गोइंग टू बी चेंज. You see this, its position will be we start the element hydrogen, helium, then lithium, then beryllium. Got it. अगर 1 by 1 अगर हम चलते हैं तो हमें हाइड्रोजन से चल करके इसके पास पहुंचने में फाइनली इट टेक्स ये कार्बन के बाद आने वाला है. गॉट इट. इसकी पोजीशन कहाँ आनी चाहिए अगर हम इसके बेस पे चेक करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गेट द पोजीशन सबसे पहले पोजीशन आएगी किसकी हाइड्रोजन की. लेटर ऑन दैट विल बी हीलियम. आफ्टर दैट lithium and then after लिथियम की बात अगर कर लिया लिथियम की अगर हम बात करेंगे then after बेरिलियम आना चाहिए था बट ये नहीं आएगा. व्हाई. बिकॉज एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम लिख रहे हैं तो देयर विल बी व्हिच एलिमेंट बोरान and after the boron there will be carbon. And after the carbon there was supposed to be beryllium. या बेरिलियम आना चाहिए. Got it. But this is not correct. देन मेंडलीफ ने क्या किया. मेंडलीफ ने इसकी करेक्शन की. मेंडलीफ का कहना था कि दिस वैलेंसी 3 इज नॉट करेक्ट. गॉट इट. बेरिलियम इज सपोज टू बी डाइवैलेंट. तो करेक्शन किस में था मेंडलीफ की. इसमें बेरिलियम की वैलेंसी को मेंडलीफ ने कितना प्रूव कर दिया 2. एंड आफ्टर द मेनी रिसर्च ही डिड दैट की वैलेंसी ऑफ बेरिलियम जो हमें जो यहाँ पे गेसिंग चल रही थी ट्राईवैलेंट एलिमेंट इसकी वैलेंसी को उन्होंने कैंसिल किया आफ्टर मेनी रिसर्च एंड फाइनली ही प्रूव दैट किसकी वैलेंसी 2 होगी. 2 होने से अगर हम इसको वापस सेम फार्मूला लगाते हैं तो हमें ये करेक्ट एटॉमिक मास आ जाएगा 4.5 इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई 2 and we will get the answer 9. And this is the correction. And this was the correction done by Mendeleev. तो क्रेडिट गोज टू Mendeleev फाइनली जो आज जो करंट ऑर्डर हमारे पास है उसमें बेरिलियम की जो प्लेस है दैट इज सपोज टू बी हाउ वेयर आफ्टर द लिथियम. हाइड्रोजन का 1 है. हीलियम इज गोइंग टू बी 4 एंड आफ्टर लिथियम 7 एंड बोरान इज गोइंग टू बी 10. बिफोर दैट बेरिलियम इज गोइंग टू बी 9. बेरिलियम का 9 है. कार्बन इज गोइंग टू बी 12. गॉट इट. So this is the first point. You will say that Mendeleev did the correction of atomic mass of few elements. And what was those few elements की अगर हम बात करें तो few elements में आपको सबसे पहले यही आएगा. That is your this is the
beryllium atomic mass is going to be 9. और एक और अच्छा, उन्होंने एक अच्छा काम क्या किया था, what the another good thing he did, he kept noble gases at separate place. noble gases का उनका मानना था कि noble gases do not react with anyone, तो noble gases की वैलेंसी को उन्होंने क्या माना, 0. so that he kept noble gases at a separate place in a zero group. तो noble gases की अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो it was supposed to kept zero group. That was the all about merits of Mendeleev periodic table. My pen is dancing, you can see that it's doing some magic. Got it. इसको भी आज ना डांस करना अच्छा लग रहा है. फर्स्ट पॉइंट में हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया, सेकंड पॉइंट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डीमेरिट्स. डीमेरिट्स आर मेनी बट आपको मेन पॉइंट्स क्या रिमेंबर करके रखना. डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. लाइक द ओल्ड पीरियोडिक टेबल डीमेरिट्स बहुत सारी हैं. लाइक द फर्स्ट डीमेरिट इज व्हाट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन.
position of hydrogen was not proper. Not fixed, not proper, आप ऐसे बोल सकते हो. मेंडेलीफ ने हाइड्रोजन से बोला कि तेरे लिए दो घर है. Either you can live in ना, either you can live in group first along with the alkali, either you should live along with the group seventh A with halogen. So this was not proper at all, got it? This was not proper. Position of hydrogen was not correct at all. क्यों हाइड्रोजन हमारी दोनों बैलेंसेस को कर रहा था. It was supposed to be, you know, either like a metal, like a non-metal, lower element. मैंने पहले भी बताया था, इसलिए इसकी पोजीशन उन्होंने फिक्स नहीं किया. Next, no proper place for isotopes of hydrogen. Not for any isotopes. So no proper place of isotopes. How the place was not proper? Because इनका जो खुद का स्टेटमेंट था, he arranged himself elements in increasing order of their atomic mass. Got it? तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 and another is 1H3. So if we see that, you know, its atomic mass is 1, atomic mass is 2, atomic mass is 3. तो अगर हम ऐसे चलें सीक्वेंस में चलते हैं, 1H1 पहले आना चाहिए था, later on 1H2 आता, and after that there should be 1H3, and after this only the possibility of 2He4, then after lithium 3 and 7, but this was not happened. Mendeleev suggested that ki you all belong to same hydrogen family, so you have to live together, you have to compromise, but this was not according to his own rule. रूल के हिसाब से क्या करना था कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के सीरीज में रखना था, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया. वो इनका जो ऑर्डर था, एलिमेंट मस्ट बी केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, दैट वाज नॉट प्रॉपर. थर्ड कहता है कि नॉट ए प्रॉपर प्लेस की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं था. सम ऑफ द प्लेस इन पीरियोडिक टेबल. थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है? एट सम ऑफ द प्लेस इन पीरियोडिक टेबल Mendeleev kept the element having higher atomic mass, before the element having lower atomic mass. So this was not proper. What it? This was not proper according to his own rule. इनके रूल्स को भी अगर हम फॉलो करते हैं तो दिस वाज नॉट अ प्रॉपर. गॉट इट? दिस वाज नॉट प्रॉपर. For example, if you see that in a position of tellurium and iodine,
So if you see the tellurium iodine, this is the one of the exception. Iodine is going to be, tellurium का atomic number iodine का अगर देखते हैं तो this is going to be nearly 126.9. और टेलोरियम का अगर देखेंगे तो दैट इज 127.6 समथिंग. So this is bigger. Iodine was kept in group 7. This was kept in group 6. 6A. So that was not a proper placing. One more exception is there between the cobalt and nickel. Group 8. If you see that, there's iron, cobalt, and nickel. Atomic mass of cobalt is more than nickel. इसका nearly 59 होगा. This is going to nearly 58. So this was not correct. 1 more point in the positive points आपको लिख लेने. नेगेटिव पॉइंट्स हमने इसको कवर कर लिया. लेटर ऑन 1 more positive point मेरिट्स में हम अगर इंक्लूड करेंगे. Mendeleev left some gap in periodic table. So that question used to come like that. Define eka boron, eka aluminium, and eka silicon. Eka boron, eka aluminium, and eka silicon. When we talk about the eka boron is the answer. If we talk about the answer, eka boron is scandium. And eka means one place below. eka aluminium is your gallium. मेरे गलियों में ना आना दोबारा. Don't come in my route. That is your gallium. And eka silicon, and that was your germanium. The term eka, what do you mean by eka? You will say that Mendeleev को हम एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं. फ्यूचर के विषय में उनको शायद पहले से मालूम हो जाता था. तो Mendeleev, you will say that Mendeleev left some gap in periodic table for the element which were not discovered at his time. Eka means one place below. One place below. So you can see that आपको पोएम याद है बाबा अली गंडिया था लेकर. तो बोरान इज देयर. बोरान, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ एल्युमिनियम, एंड उसके बिलो में वन प्लेस यहाँ पे ब्लैंक था. दैट वाज इन फ्यूचर इट डिस्कवर्ड. इसका नाम उन्होंने डाला. दैट वाज गैलियम. करेक्ट. बोरान के नियर बाई में अगर ओल्ड पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो स्कैंडियम भी आपको मिलेगा वहां पे. सिमिलरली यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, one place below the silicon was left. That was in future discovered, known as germanium.
No, this is about, old periodic table. तो demerits की अगर हम बात करते हैं तो position of isotopes were not proper. There were some places where the element were not came in proper way. No.
This first topic is already covered. यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो we did this law, Newland's law of octave as well as dominator triad. ये टॉपिक दोनों हमने कवर कर दिया. Later on we had discussed this Mendeleev periodic table old one. यहाँ पे in between we have to discuss एक का एल्युमिनियम, एक का गैलियम, एक का सिलिकॉन. ये आपको बोल्ड लाइन में जो दिया या तैयार होना चाहिए. This was the old Mendeleev periodic table. और यू कैन सी दैट अगर आपको यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करना है तो हमने जो अभी एक्सेप्शंस पढ़े वो इसमें कहीं कहीं आपको मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत केयरफुली देखना होगा. एंड हाउ यू कैन सी दिस, आई विल जस्ट लिटिल बिट जूम. ये मिलेगा हमें. एक तो ग्रुप 8 वाले एलिमेंट्स कहीं अभी घूमने चले गए हैं. लेकिन मुझे लग रहा है टेलोरियम मुझे मिल जाएगा. टेलोरियम यहाँ पे है और आयोडीन यहाँ किसके बाद था. अगर इनके एटॉमिक मासेस चेक करना है तो आपको मिल जाएगा ग्रुप 7 में. बॉडी इसका 127.6 समथिंग होता है और आयोडीन का होता है 126.9 अप्रॉक्स. और दिस इज गोइंग टू 127.6. गॉट इट. तो दिस वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन हियर नाउ. आफ्टर द after this Mendeleev old periodic table, you have to go with this, that is the modern periodic table. So if you see that carefully, that key, we must bear in mind that for the Mendeleev developed his periodic table, the chemist knew nothing about the internal structure of atom. यू मतलब इनकी बातों को समझो कि इनका क्या कहना था कि मेंडलीव के टाइम में एटम के विषय में उतनी ज्यादा अप्रोच डेवलप हो नहीं पाई थी. और दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम उतने ज्यादा लार्ज स्केल पे हमें मिला नहीं था. तो ये उस समय के लिए प्रॉब्लम, एक उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मेंडलीव को एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी नहीं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी और उसके ब्लॉक्स कैसे डिवाइड होते हैं. व्हाट इट. हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, आप इमेजिन करो हम 22 सेंचुरी में है, तो मतलब मैक्सिमम साइंस आपका जो डेवलप हुआ ना वो 19th सेंचुरी के बाद हुआ है. 20th सेंचुरी में भी विटनेस परफॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज सबएटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारे विषय में ना काफी डिटेल हिस्ट्री आ चुकी थी. 1913 देयर वाज वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड साइंटिस्ट, इंग्लिश फिजिसिस्ट. His name was Henry Moseley, and he was doing an experiment on the characteristics of X-ray spectra of the element. Then after he plot a graph, square root of frequency versus atomic number, and that gave a straight line. तो ये जो स्ट्रेट लाइन आया, बट मास के साथ जब उन्होंने ग्राफ की प्लॉटिंग की, मतलब अगर हम प्लॉट करते हैं लाइक दिस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, देन ही गॉट स्ट्रेट लाइन. और सेम ग्राफ जब उन्होंने प्लॉटिंग कर दी थी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस mass number, then the line was zigzag. Got it. This was not a proper. Finally he has proved that कि ये जो old periodic law that is not correct. यहाँ से modern periodic law की शुरुआत हुई. But this graph and studies was done by Henry Moseley. Heavy metal का what is the X-ray? Heavy metal का अगर आपके पास कोई object है, let I have a metal object. We know that metal is made up of tiny atom. Got it. Metal अगर आपका metal का block है तो tiny atom से बनता है. एटम का सेंटर में पर न्यूक्लियस होगा एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन. एंड एज सून एज यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन, हमें यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गन. गॉट इट. इलेक्ट्रॉन गन से हम इलेक्ट्रॉन की रेज निकालते हैं. यहाँ पे इसको स्ट्राइक करेंगे, मेटल क्या होगी, मेटल इज गोइंग टू बी हीट. मेटल हीट हो जाएगी और उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे आर गोइंग अंडर द टेंशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड दे विल लॉस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे. यहां से एक्सरे निकलेगी. दैट एक्सरे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसका अपने एक पर्टिकुलर रेंज होता है. उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर के जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ही गॉट ए स्ट्रेट लाइन. एंड फाइनली ही मेड अ एक्सपेरिमेंटल कमेंट दैट मतलब ये जब कमेंट आया, इट वाज आफ्टर एक्सपेरिमेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे
is the function of atomic number rather than mass number. तो characteristics of X-ray और नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा मेटल आपने वहां पे यूज किया है. गॉट इट. तो नेचर ऑफ मेटल कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड कर रही थी rather than मास नंबर. एंड फाइनली न्यू हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ चुका है. दैट वाज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें हु वाज गिवन इट, इट वाज गिवन बाय हेनरी मोसले. गॉट इट. और एट हिज टाइम, इनके टाइम तक तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ चुके थे. नील्स बोहर, तो मेनी मोर साइंटिस्ट वेयर देयर. बट हेनरी का मेन इसमें क्रेडिट जाएगा अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. व्हाट वाज द स्टेटमेंट? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर rather than मास नंबर. मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है. In the modern periodic table, if you see that up to uranium 92, nearly 92, 93, 94 की अगर हम बात करेंगे तो you will get in naturally occurring element. Got it? Neptunium, plutonium. And after that यूरेनियम के बाद अगर हम देखते हैं 92, 93, 94 and later on all the element are synthesized in the laboratory. और लैब में synthesize किए जाते हैं, artificially synthesize किए जाते हैं by the bombardment of neutron and proton. Naturally occurring element are up to uranium and nearby means 94 तक अगर आप ले सकते हो maximum. Got it. Nowadays recent discovery में यहाँ तक आ गया. Otherwise these elements are basically synthesized in the lab. तो few more scientists जिनको नोबेल प्राइज मिला है. वन ऑफ द साइंटिस्ट आपको बॉटम में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. His name is Glenn T. Seaborg. Glenn T. Seaborg. And he discovered seaborgium. तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला. तो ये कहीं ना कहीं आगे स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ प्लूटोनियम 1940 एंड फॉलोड बाय मेनी मोर एलिमेंट्स. तो इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिलता है. दैट इज नो डाउट अ ग्रेट अचीवमेंट. सिबोर्जियम जो उनका ऑनर, उन्हीं के नाम को ऑनर देने के लिए सिबोर्जियम का नाम डाला गया. एज एटॉमिक नंबर इज 106. गॉट इट. 106. नाउ इफ यू सी दैट इंटायर पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे और इंटायर पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गोइंग टू बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गोइंग टू बेस्ड अपॉन electronic configuration. Got it? The screen is not visible. Okay, wait. It's visible. Yes. So now we are going to discuss about the modern periodic law. I've already explained about the statement. Yes. This is very important definition. Mostly asked in the examination, school examination में बहुत आता है. वैसे भी आपको याद होना चाहिए. This is the properties of the elements are the periodic function of their properties of the elements are properties of the elements are periodic function of their atomic number. Properties of the elements are periodic function of
their atomic number. Got it? Now, in modern periodic table, there are 18 group and 7 periods. In modern periodic table, there are 18 group and 7 periods along with 118 element. And one more element discovered very recently, its atomic number is 119. And all 118 elements are divided into 4 blocks. One is known as S block. And that is known as P block. And third one is known as D block. And fourth is known as F block. Where S block consists of group 1 and 2. P block consists of group 13 to 18. And D block consists of group 3 to 12. No doubts when we talk about that block. The elements are taken out from group 3 only. Elements are taken out from the group 3. And the general electronic configuration की अगर हम बात करेंगे, what are the general electronic configuration of this, general electronic configuration. For this block, it's going to be NS 1, 2, 2. For the D block, S subcell may have either 0 to 2 electron. Then after N minus 1 D, minimum 1 to 10 electrons. Whereas, sorry, this is going for, इसको मुझे कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाना होगा क्योंकि ये हमारा डी का पार्ट है और हम ऊपर ला दें व्हाट इट 0 n-1 d
1 to 10, 1 to 10. And for p subcell, अगर हम p block की बात करेंगे, that is ns subcell, ns2, npx, for x ranges from 1 to 6. Last is your f block element. S subcell, always they are having 2 electron. उसके अंदर अगर हम जाते हैं n-1 d subcell, they may have either 0 to 1 electrons, and n-2 f subcell having 1 to 14 electrons. This is all about, general electronic configurations. Now, as a whole, if you see that, what the periods, the very short periods, very short period. In very short period, there is only 2 elements. This is the first period. There is only 2 elements. One is hydrogen and another is helium. But when we talk about another is short period, the short periods are second period as well as third period. In second period, we are having 8 elements. Start from, lithium to neon. First element is lithium, that is the atomic number 3, and maximum is going to be neon, that is having 10. And this is the third period की बात करेंगे, that is also, short period category में आएगा. That is going to be same 8 elements. They are starting from sodium 11 to argon 18. Then after, it will start with the long periods. Long period start, that is the fourth period. Starting element is potassium 19, and the last element is going to be krypton 36. Then we are having how many 18 elements altogether, and the same goes again under long period, that is fifth period, and that will start from rubidium 37 to last krypton. After the krypton, there is a xenon. 54. Again, there is 18 elements. The sixth period, last one is your seventh period. Seventh period,
There are going to be 32 elements in each. 32 elements. Now, how to decide a period in a group? That is very important, and block. The next session we will start with this topic, how to decide group periods as well as block. And after that we will start properties, variation of the properties in modern periodic table like atomic radii, ionization enthalpy, electron affinity, electron gun enthalpy, electronegativity, metallic character, valency, oxidation state, all and nature of oxides. So next session we will start how to identify group, block, and period, as well as what is the valency, what are the nature of compound. That's a very important topic. Have a nice day ahead. Good night. तो